Krishna, happy Janmashtami to all of you. May Lord Krishna bring lots and lots of happiness in your life. Always be happy and healthy. And with this positive thought, let us start with our session today. So, जिन्होंने अभी मेरा सेशन को देख चुका है, जो मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, उन लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं हमारा फोकस क्या है, व्हाट आर वी अप टू. बट दोज हु आर न्यू टू द चैनल, जो आज चैनल में पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई एम अलका कंडवाल एंड अवर फोकस इज PGT कंप्यूटर साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो हमारा फोकस, फुल फोकस उस पे है. और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जनरली दे आर इनटू बैंकिंग आल्सो, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर एक मैंडेटरी सेक्शन है. सो फॉर दैट आल्सो अ सेपरेट प्लेलिस्ट इज देयर. So that is definitely, I assure you that if you see all the whatever is there no in the sessions, so you see all the sessions, so I am sure that you will get 100% questions from those series. But the thing is that आप लोगों को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, और आप अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेंगे तो आपको टर्म्स याद रहेंगे. सो ये है. और दूसरा, द मैथमेटिक्स इज डेफिनेटली अवर thing which I will be including on weekends, generally the mathematics sessions, generally for the children from grade 8 to 10 basically right now. उसके बाद 11th and 12th का भी sessions आते रहेंगे. So for that you have to make me feel motivated and just share, subscribe to the channel so that I feel motivated and I can come up with more exciting sessions which will definitely benefit you all. So today let us come back to our Python programming language. We were talking, हम लोग Python programming language के बारे में बात कर रहे थे. हम बात कर रहे थे कि Python programming language Dieter von Rossum उन्होंने बनाया था February 1991 में. हमने बहुत सारे एडवांटेजेस उनके बारे में बात किए हैं. Python programming languages, what are the short disadvantages that we have discussed in detail. and हमने एक Python का फर्स्ट MCQ सीरीज भी कर चुका है. सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग फास्ट. तो एक छोटा सा सेशन, छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं. सो दैट इज योर मैथ मॉड्यूल इन पाइथन. Okay, so that is a very important module, and let us see what are the functions which are defined inside that module. So let us get started. So all of you just see what are we talking about today, the math module and the functions therein. So chalo, that is a very important part I am telling you. Okay, math module. First of all, let us talk about what does the math module provide us. So generally आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल की बात करते हैं, या हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, या किसी भी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज में हमारा पाई की वैल्यू यूज होती है. डू यू नो दैट? सो the pi value, the pi is a constant which is defined inside the mathematics module. तो उसमें अभी मैं बताऊंगी एक प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग कैसे मैथ मॉड्यूल को पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. तो ये जो पाई की वैल्यू है 3.14 एंड एकदम प्रिसाइज वैल्यू इज गिवन बाय योर मैथ मॉड्यूल. एंड वन मोर कांस्टेंट e, the value of which is tell me what is the value? 2.718 approximately this value. So ये दोनों constant हम लोग use कर सकते हैं. Okay, so these are the two constant. Now let us talk about what are the functions. क्या functions provide करता है. तो अगर हमको functions का use ही नहीं पता होगा तो हम लोग use ही नहीं कर पाएंगे. And for those who are giving the exams for PGT, TGT, they might give you the questions, they might give you some output based question based on the module. ओके तो जैसे कि मैंने लिख दिया math.ceil और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 1.03.
अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, जब हम लोग को यही नहीं पता होगा कि ये CEIL क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द CEIL फंक्शन, सो याद रखना दैट इज द सीलिंग फंक्शन। ओके, नाउ हाउ डू वी रिमेम्बर कि इसका काम क्या है। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है वो एक इंटीजर हमारा रिटर्न करेगा, और वो कैसा इंटीजर रिटर्न करेगा, जैसे हम लोग एक रूम में बैठे हैं, सो नीचे फ्लोर है, ऊपर सीलिंग है, तो सीलिंग मतलब अपर वैल्यू, द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दिस इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग, डू यू रिमेम्बर, पाइथन में हम डेसिमल वैल्यूज को फ्लोटिंग वैल्यूज बोलते हैं। तो 1.03 से बड़ा वैल्यू क्या है, 2.0, so the ceiling matlab it will give the value 2.0 which is greater, understood, ceiling मतलब उससे बड़ा होगा। अब हम लोगों को ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ गया math dot CEIL negative minus 1.03, now do you remember the number line, so we talk about 0, we talk about -1 and -2। अब आपको ये तो पता होगा कि -1 -2 से बड़ा है, yes, -1 -2 से बड़ा है, और 0 -1 से बड़ा है। तो हमारा वैल्यू, इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ है कहीं -1.03, तो -1.03 से बड़ा वैल्यू क्या है, -1.0, so the answer here will be -1.0। does it make sense। आपको क्या लिखना है कि सीलिंग मतलब हमको उससे बड़ी इंटीजर, is it not, so यहाँ पे -1.03, don't get confused in this, okay। तो -1, जब हम लोग ऐसे एक फ्लो में रहते हैं तो हम सोचते हैं -1 -2, मगर ये ध्यान रखना आप लोग कि -2 तो छोटा है, -1 बड़ा है, so we have one ceiling function CEIL। now the next function is floor function, math dot floor। अगर मैंने सेम एग्जांपल लिया 1.03, फ्लोर फंक्शन अगेन इट रिटर्न्स अ इंटीजर जो लोअर वैल्यू होगा, लोअर इंटीजर, तो 1.03 से लोअर means it will return 1.0, and then if I write my math dot floor negative -1.03, then what will it return, tell me, -2.0, छोटा, फ्लोर मतलब छोटा वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से छोटा कौन सा है इंटीजर, -2, so the answer will be -2.0। so these are the two functions we have learned। अब आगे तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, दो constants and two functions, right। so now when we talk not only these functions, we in the math module we are having a square root function, square root। तो अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मैंने दे दिया math dot sqrt 81.0, so do we remember the square root, so the answer will come out to be 9.0, 9 into 9 gives you 81, so that is the value, that is the use of the square root function sqrt। अगर आप लोग ने लिख दिया square root, math module will not recognize, you will have to write sqrt, fine। so that is another function, that is a very important function। now there is a function f_abs, that is absolute value, absolute मतलब positive, अगर कोई negative value भी दे रखी है, जैसे math dot fabs दे रखी है और उसमें मैंने बोला -2.5, yes, so absolute matlab it will give you the positive, right, negative values, absolute function we know that, is it not, maths में हम ऐसे represent करते हैं। तो वैसे ही इसके लिए पाइथन में अगर हमको एब्सोल्यूट यूज करना है, we will be using math.fabs function, fine। so we have the square root function, we have the f_abs, and then we are having the POW power function। अगर हमको जैसे 2 to the power of 100 है, अगर 2 to the power of 100 है, इसको हमको पाइथन में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, math.pow और बेस जो है यहाँ पे 2 और उसका x पावर क्या है ऐसे लिख देंगे, यस। 2 to the power of 100, 2 to the power of 50, तो बेस हमने पहले लिख दिया, उसका एक्सपोनेंट, उसका जो पावर है उसके हमने बाद में लिख दिया, सो वी कैन यूज द पावर फंक्शन, यस। सो दैट इज द these are the next three functions, square root, absolute, and then the power। then very important, okay, then we are having another function that is exp, exponent। तो natural, it returns the natural logarithm e, जैसे e to the power of 2 है, तो हमने लिख दिया math dot exp 2, yes। sometimes we get this function, अगर मैंने अगर क्वेश्चन में आ गया
e to the power of 5y. इसको represent करो in the form of function. So we will write math.exp 5 multiplied by y. Is it not? 5y मतलब क्या है? हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि 5 into y है, but we have to give the instructions to the Python clearly. तो 5 into y हम लिख लेंगे. So that is another thing. Exponentiation function. Then we have log function. जैसे अगर हमने लिखा math dot log and if I write 1024, 2 मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन log जो भी नंबर है 1024 और बेस ये, तो हमने नंबर सिंटैक्स याद करना जरूरी है, नंबर कॉमा बेस. सो जो ये नंबर है टू द बेस ऑफ 2, तो logarithm of 1024 to the base of 2, this is your logarithm. We can calculate with the help of the math function. एक log 10 logarithm लगाना है तो हमने just ऐसे लिख देना है math dot log 10 और जो भी वैल्यू है जैसे 2, so 2 log 10 to the base of 10 it will give. Fine. So that is about your log 10. will give you the base 10 logarithm. ओके, तो ये हमारे फंक्शंस हैं. अब हमारे साथ ही साथ मैथ मॉड्यूल में और भी हैं फंक्शंस. क्या है? साइन है, अगर किसी का साइन निकालना है, कॉस है, टैन निकालना है, तो मैथ डॉट, सो वी विल यूज मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन. अगर हमको किसी डिग्रीज भी एक फंक्शन होता है, एक रेडियन होता है, तो इसका मतलब क्या है? मैथ डॉट डिग्रीज. अगर हमको किसी एक एंगल डिग्रीज एक्स मतलब रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, सो यू विल यूज दिस फंक्शन रेडियन टू डिग्रीज. ओके, रेडियन टू डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये फंक्शन यूज कर लेंगे. अगर वाइस वर्सा है, लाइक वी वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन, देन वी विल बी यूजिंग, यस टेल मी, मैथ डॉट रेडियन एक्स. डज इट मेक सेंस? तो ये है आपका रेडियन x, y, whatever. So if you want to convert it from degrees to radian, these are the functions you will be using. So let us get started with its application. So for example, you want to calculate the area of a circle. So what you will do? अब आप लोग पहले import कर दोगे. Import math. मतलब हमको मैथ की फंक्शन यूज करनी है, मैथ का कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज करना है, तो हमने इंपोर्ट कर लिया. अब हमको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. यस, so what we will do, import math, and then what we can do, radius we will ask the user. तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल भी हो सकता है रेडियस, तो हम लोग r is equal to float input and then ये प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम. ओके, enter the what, radius. Would you require the radius or not? Enter the radius of the circle. जो भी आपको आउटपुट में डिस्प्ले करना है in the console, वो आप लिख दो. r is equal to ये. अब हम लोग ने a is equal to सीधे ऐसे कर देना, math dot pi multiplied by r multiplied by r. Does it make sense? Multiplication, you will use this symbol. Okay, shift and 8 you will be using. You will type the program and it will calculate the area. So it will say print, then you can give the message, the area of the circle is, the area of the circle is a. Yes, तो ये हो गया आपका area and then you just run it and you will get the output. तो ये एक example हो गया to use the constant. अगर हमको कोई फंक्शन यूज करना है उसका भी एक कर लेते हैं, and then I will just wind up. Okay, don't worry. So here we are having the next one. For example, मैंने आप लोगों को बोला कि पाइथागोरस थ्योरम, you know the पाइथागोरस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन मैंने बोल दिया आप लोगों को कि आपको वो एप्लीकेशन करना है पाइथन प्रोग्रामिंग में. So we know that hypotenuse is equal to square root of base square plus perpendicular square. ये सबको आता है. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट import math, definitely import math we are doing, and then take the two variables. B is equal to क्या करेंगे, float input, enter the base of the right angled triangle, enter the base, you can write, okay, of the right angle triangle, you can just complete it. फिर हमने perpendicular लिखा, float and then input. Do you remember input function? If I ask you input function,
किस में रिटर्न करता है वैल्यू? स्ट्रिंग में। इसलिए हम बार बार ये फ्लोट कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है, जो अगर यूजर ने 5 डाला तो उसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो फ्लोट में, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। फिर enter the perpendicular and then we write now the application. Okay, h is equal to square root है, तो हम क्या करेंगे? math dot sqrt, और अंदर में क्या है? b square है, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट b into b plus p into p, बस इतना लिखना है। क्योंकि पाइथन को अगर हमने डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, इट विल नॉट अंडरस्टैंड योर स्क्वायर रूट सिंबल, इट विल नॉट अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द पाइथन की, जैसा पाइथन को समझ में आ रहा है इंटरप्रेटर को, हम वैसा ही इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो जस्ट यू देन राइट इट डाउन, प्रिंट द hypotenuse of the right angle triangle is, hypotenuse is nothing but h, bas. So just type it in the script mode. Do you remember there are two modes, script mode and interactive mode? इसको type कीजिए, save कीजिए, run कीजिए, and then you will see the error message coming. Enter the base, enter the perpendicular, and then the square root. It calculates the square root. अगर स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं होता तो हमको लॉजिक लगाना पड़ता, मगर ऑलरेडी देयर आर फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड इट becomes very easy for us to do the programming. That is why it is said no, very easy to use, easy to program. So yes, that is why, because of the functions availability and because of the easy syntax, Python is a great programming language. So happy Janmashtami to all of you. तो परिवार को और आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो जरूर जरूर मोटिवेट कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन।